So we're all set, getting ready for this important game, pre-quarter finals. Two strong sides. One Kuti Panchayat and the second one from Asnoda. Dalvi Srikers and Super Spartan Asnoda. Some highly decorated players playing in this particular match. Some players definitely missed in Dalvi Srikers camp. Inclusion of them will have strengthened their team in bowling and batting department. One very renowned name is Pranal Sawant, which is definitely missed here. Well, yes, and that I think is big players, big name, and one different and big change from the previous game to this game is the inclusion of Rohan Salgaonkar and Punaji Kalangudkar. So these two stalwarts, one a batting all-rounder, one a bowling top-rated all-rounder, Rohan and Punaji Kalangudkar are now back into the side. They're playing a different tournament. They're not available for the first game. Now they've strengthened the unit. So let's see how Dalvi Srikers manage to hang on tightly to this game and get these sponsoring the team's players becomes utmost priority. Super Spartans also sponsoring this Asnoda team, understanding that they are also very professional outfit, winning a lot of tournament in Goa and making it into the semi-finals. Consistency is making it into the semi-finals. That makes name for your team, and that is what Dalvi Srikers need to consistently do and follow. Looking to play on the leg side, well bowled so far. Kept the scoring in check so far. Just the 2 runs on the board. One a leg by, second a single of the bat to the left hander. He's got a deceptive pace, so certainly I can say he's a slim build character. Doesn't seem to be bowling with that much of pace, but when he bowls at the last stride, you can generate a little bit more than you can handle as a batter. Picked away on the leg side, but still not the best of the timing. Is he going in the gap? The ball is going away from the fielder there. Long chase has been given by the fielder all the way from mid-wicket region towards the backward square leg. Couple of runs taken in the end. Moves the score to 4. Still awaiting that explosion from Punaji Kalangudkar. He's just watching the ball. He's playing the first game here on this deck, on this concrete surface, so he is going to assess the condition. This is India. This might be a chance. There's a fielder kept down there. Too sharp. A final. Played like that, I just can't imagine the way you can just shift it all across differently, but he does it and he plays well. That's more important. Doesn't matter with the rock hand or not. Well played, well placed. Should be a single. A fine over here from the young boy. Really a fine over from Saurabh. Getting the most important wicket. Punaji Kalangudkar back in the pavilion. It's 5 for 1. Super Spartans Asnoda.
in the air, that is out of the ground. Yes, it is. That is hammered down the ground, straight over the top. 6 runs at long on. Bottom hand with the left hand. Well ball, well picked on the leg side. Should be a boundary at least. And that's why he has got fast hands. You can't take him lightly just because he is a wrong bottom-headed player. He is a really skillful player who can whack the ball easily. Expensive so far, 16. Nicely bowled. This is much better length. Skidded on, kept low, not flipping the ball in the air. Now they must have understand the strength of this boy, Vishant. He can't be taken lightly, and that is why that talent must have been seen from the experienced and seasoned campaigner like Rohan and Pranajit Kalangurkar in this young boy, Vishant, who has the skill of clearing the fans with ease. Once again, going downtown. This time the ball was slightly fuller, could not get the elevation. That's why he gets a single. 17 runs of this over so far, with a couple of sixes and a boundary. Slightly expensive compared to the Dalvi Srikers standard. Looking to hit the ball on the leg side. Finally finishes the over well here with 2 singles and a dot ball of the last 3 balls, considering 18 runs of this over, Harsh, and that marks the end of over number 2. Is 23 for the loss of 1. Manoj looking for the exact bat. Is not striking well, he was not connecting well, feels that I need a different willow here. That's why maybe he got a little heavier bat to get the big 6s going from his bat. And a good change. They have to get sorted out because it all depends upon these first 4 or 5 players.
Well bowled, well bowled. It's got pace, he's nippy, he's fast. Very much entertaining when he's coming into bowl, and he's got that zip in him. He's got the zest in him to just excel and surprise him with pace. Very exciting stuff. New bowler coming up the ranks in Goa. Certainly I can say that. Strider. Well bowled once again. You can see that the ball is coming and hitting the bat, and he's trying to get the elevation, Manoj, but because the ball is coming quickly, he's not been able to get that quick elevation of the bat to get it over the top. He's not bowling in the slot. That's good bowling. Young boy is learning quickly. That is what the art is all about. You got to learn quickly. You don't have that much of time in tennis ball cricket. If you are not alert to the situation and the strength of the opposition camp, you will be dead buried here in tennis ball cricket in Goa, because some are just so good in hitting the ball across the park. You cannot bowl them in the arc. Lovely bowling once again. He's trying one-handed stunts there, but when someone is bowling as quick and as deep, thinking that sort of his bowling is going to be a little difficult. At the moment, he's too hot to handle. Can his score be uncoded by the batters? Manoj and Vishant was trying to just unlock the key. He's got a man. So the review has been taken. The review has been taken just because they want to see whether the fielder was outside the boundary line. So the third umpire is going to have a look. A safe fielding. That is what they are seeing in the camera. It was referred. Safe fielding. So it's 6. The meet and goes long for 6. This is in the air, and he's taken. So the left-hander, after striking a 6 and a sweet range here for Sauda, he gets rid of the danger boy Manoj, the left-hander. That marks the end of over number 3, 33 for 2.
3 after the completion of 3 overs. It's a balanced score, it's a decent score, it's not a high score, it's not a low score. They've got good bowling unit, Super Spartans of Asnoda. So let's see how they are going to progress here in the next 3 overs. Vishant on strike, and to give him company, it is Rohan Sargaonkar that has come at the non-striker's end. Played straight down the ground, did not time it that well, just going to be a single. So we got a new bowler here. So we won the name of the bowler. Well bowled once again, beautifully bowled. Mini helicopter shot, just straight down the ground, could not get the force behind. 2 singles of the first 2 balls. Sushain comes in to bowl the next one, 2 singles. Well bowled once again. And there's been sent here, so 3 singles of the first 3 balls. So at the moment it is Vishant having a word with the umpire, and if you want to they are saying we are into the perfect position here. The umpire ascertaining the fact they might be just asking for the checking of the bowler. 2 reviews allowed for the batting side to refer. This time nicely bowled. Very good slinger action. They don't look that way, naked eyes. Many of the actions are sidearm, and close-chested is not an open-chested bowler. The sidearm bowling, close-chested bowler. Sushain. Well bowled, well bowled. Beautifully bowled here. They are not tracking at the moment. He's got little extra pace because of his sidearm, and that's why the ball skids, and ball also keeps low. Sidearm also most of the times gets the ball a little low. They don't get too much of bounce. Just the 3 runs of this over. Excellent over from Sushain. Another one, lovely over. How well he bowled in this over. Looking for just a single throw straight in the hands. Just the 4 runs from Sushain. Excellent over in the contest of this game. Marks the end of 4, 37 for the loss of 2. Fourth bowler bowling over number 5. Previous over was an excellent over from Sushain. Just getting the things back on track for Dalvi Srikers. Kept the scoring in check. More better over required here. Well bowled. Well, almost like Suhail Tanvi with this action. We saw that during the IPL, the first and second edition, he was there in the camp. Similar sort of action. Very deceptive. If he has got a wonderful slower delivery, then it can be very deceptive with this particular action. Right in the slot, and that's been hammered down the ground for a maximum. Straight over the top, straight out.
So far the score is into the over number 5. India, this might be a chance. Going over the top, second 6 of the successive balls, missing the target, bowling on the bat, and that's been smacked over the cow corner region for a maximum. Spartan Asnoda with that 6. Another one. That takes the score to 56. This time he fired it outside. That's the pressure of 3 sixes. When you got pressure of 3 sixes by the batter, you don't know where to bowl the next one. He has missed the trajectory on all 3 occasions. Either bowl full or either bowl right in the slot. In the hitting range once again. He's bowling in the hitting range. Club of this over has changed the entire complexion of the game. So next match is going to be Riddhi 11 Parsha and Katamga Dada that are going to play the next game. So Riddhi 11 Parsha and Katamga Dada. This time might be just getting the single and will keep the strike of the next over. A very expensive over in this situation here for Yapin on his side. Marks the end of over number 5. 64 for the loss of 2. Half century. We have seen Syed Badi getting the half century in the very first game of this tournament so far. And Amir Gadekar getting a half century yesterday in yesterday's game. So can we see one more half century? Well bowled, right full up. So starts off with the dot ball. Piyush coming in the bowl. This last over, so far the score is 64. Well, they should not allow the score to go towards that 80-run mark. If it goes towards 80-run mark, well, it will be 15 runs more burden on the side chasing. Well, once again, excellent bowling right in the block hole, looking for a couple of runs. The fielder is misfielded. He came charging towards the ball, and the ball just deviated a bit, and he gets the strike. Moves on to 47. Score moves on to 66. 3 runs away from his half century. Vishan bowling well here. 2 perfect deliveries in tennis ball cricket by Piyush. Vishan he strikes, and he is a power. Towering 50. The wrong
innings at the right time. And Vishan on the screen. Yes, there's a half century which has been applauded by all the cricket lovers who love such sort of sparkling innings from this young boy. Another one. All are just loving him at this moment. 7 to 8. I was just mentioning one is to miss the length and bowl in his range. He has got a quick bat speed and a huge back lift that takes the ball for long sixes. Nobody will have thought a wrong bottom-handed player can clobber the ball to such a long distance. But here is one example. Cricket gives us so much of surprises and miracles. There is one surprise, one unusual and unpredictable nature of the batter is giving us the half century. Finally, a rare miss here, rare miss from his bat, which will be a single. So this will be the last ball. 79 with one ball to go. I was talking about that 80 run mark. If they breach, won't be easy. They're breaching the 80. So left it. So they enters into the 80s club. They mark their entry into 80 runs. Super Spartan Asnoda. Rohan Salgaonkar is going to face the last ball. And he gets him. He gets in there and knocks his balls over the groves. That is a good finish here for Dalvi Srikers, but I think these two costly overs might just prove to be fatal here for the team Dalvi Srikers. They would have hoped and restricted them to maybe somewhere around 60-65, which they would have liked, but I think they've got 15 runs, little bit more here, the team Super Spartans Asnoda. But you never know. One or two batters striking. Tushar is there in the camp. There is Harsh as well who can bat. Let's see how deep they take this game in chasing these 81 runs. तुमका कॉल येता पयलो खटनगाव दादा हांगा पाविल्ले आसात प्रसाद अबुलाल पठाण द कॅप्टन जो हांगा ऑलरेडी आसा आनी रीड दी 11 तुका विनंती करता कॅप्टनाक वा तुजे खातीर पयलो कॉल येता मातसो बेगीन येवचो. बढ़ते हैं दूसरी इनिंग की तरफ.
पहले इनिंग की अगर बात की जाए तो टॉस जीता दलवी स्ट्राइकर्स ने पहले गेंदबाजी करी। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था सुपर स्पार्टन्स के बल्लेबाजों को। पुनः कलंगुट करके हालांकि उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई, लेकिन विशाल नाम का तूफान मैदान पर आता हुआ और इस लक्ष्य को पहुंचाता हुआ 80 रनों पर कुल मिलाकर 81 रनों की आवश्यकता है दलवी स्ट्राइकर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और सलामी जोड़ी मैदान पर तुषार और पीयूष और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बेहतरीन गोवा के बॉलिंग ऑलराउंडर रोहन सागाकर। इक्यासी रनों का ये लक्ष्य जो कि काफी बड़ा। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो सुपर स्पार्टन्स की काफी अच्छी गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो पीयूष और तुषार अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। ओपनर्स के तौर पर फिलहाल मैदान के अंदर रोहन सागाकर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, एक छोटे रनअप के साथ सामने स्ट्राइक पर पीयूष सामना करेंगे रोहन की पहली गेंद का। पहली गेंद अच्छी गेंद से मान दिया। इस गेंद पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी, लेकिन खुद को संभाला। जब तक खुद को संभालते गेंद को रोकते तब तक एक सिंगल पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और अपना खाता खोला पीयूष ने। और फिलहाल स्ट्राइक लाइन पर तुषार। फुल टच गेंद, दिशा दी, इस गेंद को भेज दिया स्क्वायर बाउंड्री पर, 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौका। चार रन बटोरे अपनी टीम के लिए। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल बेहतरीन कमबैक, वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है, उसी तरीके से गेंद सीधे जाकर के विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से डॉट के निकली मैदान पर। इस बार भी खूबसूरत गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की है गेंद, कुछ पढ़ नहीं पाए तुषार जैसे बल्लेबाज को खामोश रखा। हालांकि एक चौका जरूर निकला इनके बल्ले से, लेकिन रोहन सागाकर जानते हैं कमबैक किस तरीके से करना है। इस बार स्विच हिट खेलना चाहते थे, अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद, इस तरीके का ये शॉट मैदान पर, इस शॉट का प्रयास जरूर किया था तुषार ने। पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया था रोहन के खिलाफ, लेकिन उसके बाद 3 डॉट गेंदें मैदान पर थोड़े से दबाव में थोड़ी सी बातचीत जरूर करते हुए अपने पार्टनर से। लगातार चौथी डॉट गेंद और इसी के साथ खेल पहली ओवर का समाप्ति के, बेहतरीन ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। नामदेव बानावलीकर अपने बॉलिंग मार्क पर एक लंबे कद के ये गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल स्ट्राइकिंग लाइन पर पीयूष। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ, ये गेंद शफल होकर ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए नामदेव बानावलीकर एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं पूरे गोवा में। फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम सुपर स्पार्टन्स असनोडा के लिए। इस बार भी खूबसूरत गेंद, तेज करार ये गेंद, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जानते हैं सभी गेंदबाज की इस विकेट काफी तेज है, बिल्कुल गति का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार डॉट गेंद, लगातार 6 डॉट गेंदें निकलती है मैदान पर अब तक।
इस बार आगे निकले, स्टेप आउट किया, भेज दिया गेंद को, फील्डर रोक नहीं पाएंगे इस गेंद को, कारपेट के सहारे गेंद निकल गई सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। और चौका मिल ही गया मैदान पर। इस बार बिल्कुल अपने आर्म का इस्तेमाल किया, पहले बाउंस की वार्निंग जरूर मिलती हुई, लेकिन अच्छी गेंद नामदेव की एक और डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर, बिल्कुल दबाव डाला जा रहा है बल्लेबाज ओपनिंग पर। एक बार देखिए खूबसूरत गेंद, गति में परिवर्तन जरूर किया था, लेकिन इस गेंद को गैप में एग्जीक्यूट किया और एक्स्ट्रा करवाउंड पर 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। स्कोर की अगर बात की जाए तो 13 रन। इस बार खूबसूरत गेंद, एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति, खेल 2 ओवर का समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी की बढ़ती पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर रोहित सालगांवकर फिर से एक बार टीम के लिए तीसरा ओवर करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर कर रहे हैं। पावर प्ले के ओवर खत्म होते ही तीसरा ओवर, 5 खिलाड़ी 30 गज डायरी के बाहर, रोहित सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। पहली गेंद संभाल दिया, इस गेंद को खूबसूरती के साथ कलाइयों को बोला और गेंद को भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। स्कोरबोर्ड पर 17 का खतरा मैदान पर मंडराता हुआ, थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर कर रहे हैं तुषार के लिए, बिल्कुल छक्के चौकों से डील करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है। पिछली गेंद पर चौका लगाया, फिर से एक बार रोहन तैयार अपने बॉल मार्ग पर। इस बार गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका जरूर था लेकिन थोड़ी सी दूर फील्डर से ये गेंद, इसी बीच एक सिंगल पूरा करने का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18 रनों पर 18 बिना किसी नुकसान के। इस बार लोअर फील्डर्स की गेंद खेल दिया, इस गेंद को रॉक ऑन बाउंड्री पर नामदेव बाउंड्री कर, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक और सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में और रन संख्या 19 रनों पर पहुंचती हुई। इस बार खूबसूरत शॉट, दिशा भी इस गेंद को भेज दिया थर्ड मैन बाउंड्री पर, देखना होगा इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे फील्डर, निकल गई गेंद कारपेट के सहारे 4 रन के लिए। जुट चुके हैं अब तक तीसरा ओवर प्रगति पर, रोहित सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। और इस बार देखिए गेंद चकमा जरूर दिया था वहां पर, बिल्कुल सर से टकराई ये गेंद और इसी बीच एक सिंगल पूरा करने का समय था। एक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 24 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर की पेश सामना करेंगे रोहित की आखिरी गेंद का।
इस बार अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर तैनात एक डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए, और खेल 3 ओवर का समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी की बेंच पर खुद का पहला टीम का चौथा ओवर लेकर अगले गेंदबाज प्रजोत को आमंत्रित किया। प्रजोत के कंधे पर भार सौंपा है गेंदबाजी का। कप्तान ने अभी भी एक भी विकेट नहीं गंवाया। दलवी स्ट्राइकर्स की टीम ने तुषार फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर प्रजोत की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहती थी क्रॉस बैटेड ये शॉट, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। लेग बाइस के रूप में एक रन जरूर जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद खड़ी हो गई अपने फॉलो थ्रू में। इस कैच को अंजाम देते हुए पहली सफलता अपने खाते में डालते हुए प्रजोत, और एक बड़ा झटका लगता हुआ पीयूष। बल्लेबाज तुषार का साथ देने के लिए हर्ष मैदान की तरफ बढ़ते हुए, बाएं हाथ के खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। फिलहाल उस अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत इनकी टीम को, अगर इसे मुकाबले को जीतना है और प्रवेश करना है क्वार्टर फाइनल्स में, तो एक अच्छी बल्लेबाजी की दरकार जरूर रहेगी। दोनों ही टीमें आमने सामने, दलवी स्ट्राइकर्स और सुपर स्पार्टन्स असनोडा। इस बार आते आते बिल्कुल बड़ा शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन के लिए। को बढ़ा भी और चढ़ा भी कह सकते। इस बार फुटर्स गेंद दिशा दी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। फील्डर गेंद के नीचे बात जरूर रहे हैं लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह गए। गेंद निकल गई अराउंड द कैपेट 4 रन के लिए। थर्टी 35 रन स्कोरबोर्ड पर आने वाली 14 गेंदों का खेल बाकी और 46 रनों की आवश्यकता, 46 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार भी बेहतरीन शॉट कवर पॉइंट बाउंड्री पर। फील्डर बात जरूर रहे, नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। निकल गई गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए।
इस बार छोड़ा जाने दिया, देख रहा होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, एक अतिरिक्त रन जुड़ गया वाइड के रूप में टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 40 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार खूबसूरत शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर बोल दिया। पहली इनिंग की अगर बात की जाए तो बिल्कुल 4 ओवर काफी बेहतर घटे थे, लेकिन वो 12 गेंदे, आखिरी 12 गेंदे, उसमें 6 बड़े शॉट निकले थे। इसी के चलते वो स्कोर इतना आगे बढ़ गया। यहाँ पर भी अब मौका है तुषार और हर्ष के पास इस मुकाबले को जितवाने का। इस बार लो फुल टच की गेंद, लेकर के कंधे पर बाहर सौंपा है गेंदबाजी का। इस बार भी क्रॉस बकेट खेलना चाहते थे, फील्डर को चकमा दे के गेंद निकल रही है, लेकिन बैकअप हो रहा था वहां पर रन आगाह कर कोई गलती नहीं की। केवल एक सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल के साथ 51 रनों पर पहुंचती हुई रन संख्या। और मात्र 10 गेंदों का खेल बाकी और 10 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता मैदान पर। और हर्ष फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर बिल्कुल पवेलियन से सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एक छक्का 3 चौके जिनके बल्ले से निकले वो हर्ष फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे सिद्ध की अगली गेंद का। इस बार भी खूबसूरत शॉट, इस बार फील्डर वहां पर इस कैच को अंजाम दिया उस फील्डर ने और एक विकेट का पतन। हर्ष जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वापस जाना पड़ेगा हर्ष को पवेलियन की तरफ एक बेहतरीन कैच को अंजाम देते हुए। अगले बल्लेबाज से हर्ष के आउट होने के बाद तुषार का साथ देने के लिए सचिन को मैदान की तरफ भेजा है। इस मुकाबले को जितवाने के लिए हीरो बनने का मौका है सचिन के पास। बिल्कुल समीकरण एक बार आपके सामने रख दूं। 9 गेंदों का खेल बाकी और 9 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। और स्ट्राइकिंग एंड पर सचिन गेंदबाजी के मोर्चे पर सीट वेल लेकर पिछली गेंद पर एक बड़ा विकेट छटकाया अपनी टीम के लिए। आते आते बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, विकेट कीपर को चकमा दे दिया था गेंद में, लेकिन चौथरमैन ने इस गेंद को रोका और दूसरे रन की संभावना को बिल्कुल समाप्त किया।
एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 52 रनों पर 52 रन। इस बार गेंद खड़ी हो गई, थोड़ा जो कलम उठकर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे। तुषार की पारी समाप्त। तुषार बैक टू पवेलियन। Final call for the captain of Riddhi 11 person. अगले बल्लेबाज मानते शाह आते आते स्वीकार से जोरदार बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति सीट में करके इस ओवर में एक बड़ा शॉट जरूर लगा, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक। अब मात्र समीकरण मैदान पर बदलता हुआ आखिरी 6 गेंदे और 6 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता, 5 बड़े हिट की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। था ये मुकाबला कहां आके रुक गया है। आखिर 6 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। वो आखिरी 2 ओवर पहली इनिंग में 42 रन उस 2 ओवरों से निकले, वो काफी महंगे साबित होते हुए। इस बार पहली गेंद इस बार बल्ले का किनारा लगा, शॉर्टर मैन इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन इसे बीच एक सिंगल पूरा किया। अब मात्र 4 गेंदे 22 रनों के समीकरण मैदान पर 4 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, लंबे कद के खिलाड़ी इस गेंद को बिल्कुल नाम दे जानते हैं, कैच नहीं पकड़ा लेकिन इस गेंद को रोका। रन बचाने जरूरी इस आखिरी ओवर में केवल एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। अब मात्र काफी असंभव दिखाई देता हुआ यह लक्ष्य, आखिरी 3 गेंदे और 3 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। इस बार फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस गेंद पर बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर तैनात, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। अब मात्र औपचारिकता बाकी रह गई इस मुकाबले में। काफी अच्छी गेंदबाजी सुशांत की, हालांकि 30 रन डिफेंड कर रहे थे, लेकिन इस बार गेंद खड़ी हो गई। कैच का मौका लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर रोहन सागावकर, कैच छूटा मैदान पर, एक जीवनदान मिला, लेकिन इस जीवनदान का फायदा तो नहीं उठा पाएगी बल्लेबाज, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। इस मुकाबले में वापसी करना नामुमकिन। और चलिए इसी के साथ
ये मुकाबला समाप्त होता हुआ इस मुकाबले को जीत चुकी है सुपर स्पार्टन्स असनोडा की टीम। हार्ड लक टू डल्वी स्ट्राइकर्स खाने पर। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बैकफुट पर दिखाई दे रही थी असनोडा की टीम, लेकिन उसके बाद विशांत की वो धुआंधार बल्लेबाजी 60 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए देते हुए मैन ऑफ द मैच के हकदार